अस्सलाम वालेकुम। नाउ अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपकी बुक के एंड में भी कुछ न्यूमेरिकल से कुछ हट के आपके इस एडिशन में मौजूद नहीं है। वो है रेक्टिलिनियर मोशन आर्टिकल 2-2 के। तो पहला सवाल हमारे पास आपकी उसमें से जो है बुक में से, ठीक है। अब हमारा सवाल हमसे क्या डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट थिंग इज टू कलेक्ट द डेटा। तो आपके पास किस किस्म का डेटा अवेलेबल है, ठीक है। A test projectile is fired horizontally। मैंने आपकी बैच से पहले भी कहा था कि वर्ड प्रॉब्लम्स को लर्न करना, को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सो काइंडली अपनी रीडिंग स्किल्स को ज़रूर इम्प्रूव करें, ये आपको हेल्प करेगी। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, द फर्स्ट थिंग इज अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इनटू ए विस्कस लिक्विड। विस्कस लिक्विड का मतलब ये है कि अब जो आपका लिक्विड होगा वो एक ड्रैग फोर्स क्रिएट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास उसमें आपकी मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी। और इसकी मिसाल कैसे है, जैसे पानी के अंदर से गुजारना और हनी के अंदर से गुजारना। हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर। सो ये विस्कोसिटी इफेक्ट है कि विस्कस सॉल्यूशन दे विस्कस मीडियम्स दे टेंड टू क्रिएट मोर रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ जब आपने फायर किया विद a velocity v naught, this is the initial velocity. The retarding force, this means the braking force, is proportional to the square of the velocity. This means so that the acceleration becomes, जो acceleration से निकालिए क्या निकाली है, so we say v naught is defined as the initial velocity, where acceleration is defined as minus kv square. Drive an expression, so what we have to find is we have to find an expression where distance d travels. Drive an expression for number one, d. D is the distance traveled corresponding to time. To reduce the velocity, distance travel to reduce the velocity to, that is v final is equal to v naught by 2, and then we have to drive an expression for distance travel and corresponding time. This means we have to find the expression for time also. So we have to find two expressions, d and time, where final velocity reaches v naught. अब हमारे पास एक टेक्निकल मेथड सॉल्व करना है, हम इसको सॉल्व करते हैं। Let's solve this problem. So we have this data a is equal to minus kx, a is equal to minus kv square, ठीक है। We can also say, based on this information, we can, okay, let's make things a bit less thick, right? Kx square, we can say v dv is equal to adx, correct? v dv is equal to adx. We can find the value. We can say v dv is equal to a is minus kv square dx. A is a function of v, तो v इधर आ जाएगा, so we can say v over minus kv square integrated from v naught to final value v dv is equal to integrated from 0 displacement, that is x is equal to 0, to distance x dx, ठीक है। And this can be solved into an equation where you can say v is considered 1 by square, and you are left with simple minus 1 over k ln of v moving from v naught to v is equal to x. Right, so let us further move on. अब हम क्या करते हैं, we know the parameters. When x is equal to d, v is equal to v naught by 2. So let us put these in the boundary conditions into the equation above. What we will get is 1 over k ln of v into v naught to v naught by 2 is equal to
डी। सो अगर हम इसको गौर से देखें तो डी इज इक्वल टू माइनस 1/k ln ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगा, v नॉट माइनस v नॉट टू, ठीक है, so that is equal to be v नॉट by v and this turns out to be v नॉट by 2। अगर आप इसको दोबारा रिसॉल्व करें so 1/k ln ऑफ 2, माइनस साइन अंदर ले जाएंगे तो 2 पर आ जाएगा, ठीक है। And you rewrite this equation, so your natural log of 2 would become 0.693 by k. This is your d। तो हमारे पास d की एक्सप्रेशन आ गया है, ठीक है। This is the first thing. So what we have concluded thus far is d is equal to 0.693 k. This is our expression for d. Now let us further solve our expression for time. हमें ये पता है v is equal to dx by dt, correct? And we can also write that kx, अगर हम ये जो इक्वेशन है ऊपर वाली इसको रीअरेंज करें, this one, and we can get this thing again, kx, ठीक है, is equal to ln of v नॉट by v। होना ही चाहिए था v by v नॉट, लेकिन माइनस साइन को अंदर लेके जाए तो v नॉट by v हो जाएगा। So we can rewrite this equation is equal to ln of v नॉट by v। So let us rearrange this equation to exponential form। तो आपके पास क्या बनता है, v is equal to implies v equals to v नॉट एक्सपोनेंट k, ठीक है, x। अब क्योंकि ये होना चाहिए था v नॉट v, तो ये एक्चुअली नीचे आना था, तो ब्रिंगिंग एक्सपोनेंट फ्रॉम बॉटम टू अप इट बिकम्स माइनस kx, ठीक है। अब आपके पास जो इक्वेशन वेलोसिटी v की आ गई है, इसको आपने इस फॉर्म में डाल सकते हैं आप, राइट हियर, एंड व्हाट यू गेट इज, pardon my this thing you can say is this thing v naught e to power minus kx is equal to dx by dt, and you can say dt is equal to v naught e to power kx dx, ठीक है। और अगर आप इसको ओपन करें तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, sorry, it should be 1 over v naught e to power kx k e to power kx dx, ठीक है। अब टाइम, हम टाइम t को खोलते हैं 0 से t तक, आपने टाइम t वेरी किया, and what you get in return is, you can say integral and integral 0 to t and again 0 to x, and what you get in return is t is equal to 1 over v naught, and you open the integral, k will become 1 over k e to power x, I mean kx, and you will be moving from 0 to x, so t is equal to 1 over k v naught e to power x times k, pardon my language। So minus 1, 0 means 0 to power 0 exponent is minus 1, this is what you are going to get for time t। अब हमारे पास पता है कि when x is equal to d, ठीक है, आपको ये याद होगा, तो आपके पास एक्सपोनेंट वैल्यू k की क्या बनती है, this is what we have to find, right? So आपके पास x की वैल्यू क्या बन जाती है, the whole thing,
दिस इज इम्पोर्टेंट. जब x इज इक्वल टू डी होता है तो यू कैन से राइट हियर v इज इक्वल टू v नॉट, v इज इक्वल टू v नॉट बाय 2. ठीक है, तो k की वैल्यू क्या बनेगी, हमें ये पता चला है कि when x is equal to, this whole expression can turn into 2. This means when x is equal to d, this expression e to power kx can turn into what? 2. 1 v naught by 2. From here we get this expression from this relation, right? आपके पास constant तो है ही, this whole thing will become 2. So you put this 2 right here, and what you get is time is equal to 1 over k v naught into 2 minus 1, and what you get, t is equal to 1 over k v naught. This is our expression for the time for this particular numerical. ठीक है, अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल को देखते हैं. ओहो सॉरी, मैं इसके ऊपर सेकेंड न्यूमेरिकल कुछ इंटरेस्टिंग है, सिमिलर है. Now, a horizontal motion of a plunger and its shaft is arrested by a resistance of attached disc which moves through oil bath. If the velocity of the plunger is v naught in position A, ठीक है, velocity of the plunger है v naught in position A, ठीक है, जहाँ पर x is equal to, if the velocity of the plunger is v naught in the position A where x is equal to 0, t is equal to 0, and if the deceleration is proportional to v so that a is equal to minus kv, drive an expression for a velocity v and position coordinate x in terms of time. Also express v in terms of k. So what we have to find the data, we have initial velocity is equal to v naught at a, x is equal to 0, t is equal to 0, and expression for a is equal to minus kv. Now what we have to find is, we have to find the expression for velocity and position coordinate x. We have to find the value of x in terms of time as a function of time. Also express v, that means v in terms of s. This means v is a function of x displacement. So this is what you have to find. So how are we going to solve this thing? So let's partition our, sorry, right here. Let's solve this thing. In order to solve this thing, the first thing is, we are going to say the acceleration a is defined as dv by dt, standard equation, and can also is equivalent to the expression kv. ठीक है, अगर हम इसको गौर से देखें, so we can say minus 1 over kv dv is equal to dt, sorry, or you can put k right here, your choice. K is still a constant k, ठीक है. And when you say, so 1 over v is equal to ln of v, so you can say ln of v from integral from v naught to v is equal to minus k 0 to t. This means t minus 0 is t. So what you get is v or v naught, that is ln of v by v naught is equal to minus kt. ठीक है, अगर इसको रीअरेंज किया जाए, v is equal to v naught exponent minus kt. So this is the velocity as a function of time, but we need displacement as a function of time and velocity as a function of displacement. ठीक है, so we know that v can be written as dx by dt. So we say v naught is equal to minus kt. अगर हम इसको फर्दर खोलें, this implies 0 to x dx, it can be written as 0 to time t v naught e to power minus kt dt. ठीक है, अब आपके पास जो एक्सप्रेशन होगा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आना शुरू हो जाएगा, राइट. What you get in return is
This implies x is equal to v नॉट बाई के, ये जो माइनस के है बाहर आ जाएगा 1/k की तरह रेसिप्रोकल होके, एंड you have first thing is k is equal to 0 is 0, k is equal to t वो बाद में आएगा से अपर माइनस लोअर, सो आपके पास आ जाएगा माइनस साइन के साथ है ना एक्सपोनेंट, तो ये आपके पास बन जाता है 1 माइनस ई टू पावर माइनस के टी, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस पहले आ गया, इट्स जस्ट रीअरेंज, इट्स एक्चुअली माइनस के टी माइनस माइनस 1, सो आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस 1 माइनस ई टू पावर माइनस के टी. So this is what you get as an expression for time. ठीक है, x is a function of time. So let us drive. Where is the mouse? Right here. Let us go even further. ठीक है, let's change the color. अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, x is equal to 1 to minus e to power minus kt. So let's try v as the function of displacement of x is equal to a dx. This is v. So what you get is implies a को आप माइनस के एक्स करके डालें तो के वी और वी डी वी इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स, राइट. तो वी कैंसिल हो गया एंड व्हाट वी हैव इज वी नॉट टू वी and x is moving from 0 to x right here, so आपके पास आ जाएगा v minus v naught is equal to minus kx, and what you get in return is v is equal to v naught minus kx. This is the expression for the velocity in terms of x, and this is what we were looking for. So these two were the important questions for your particular for the examples. ठीक है, तो I hope you understand these two numericals. These are the at the very last of your chapter. ठीक है, ये रिव्यू numericals में से आते हैं, तो ये आपको काफ़ी चीज़ें ड्राइव करने में और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे इंशाल्लाह. कोई और numericals हो तो you are free, please contact me. You are free to ask me questions on the topic. Thank you.